Good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you. On behalf of Neuroptech, I extend my sincere thanks to each one of you for joining us today for this live webinar. We are very delighted to see such enthusiastic participation from students and professionals across the country. I'm Shazia Shabir, and I'll be your moderator for today's session. When it comes to pediatric refraction, it's really just about numbers. Children respond differently, and many findings fall into gray areas where clinical judgment becomes very crucial. That is what today's discussion focuses on. Interpreting these scenarios clearly and making confident, practical decisions in pediatric practices. The topic for today's session is clinical approach to diverse refractive scenarios in pediatric patients. This will be a practical, case-oriented discussion aimed at strengthening clinical judgment rather than just the theoretical knowledge. And to guide us through this topic, it is my pleasure to introduce our speaker for today, Mr. Suman Thakur. Suman sir is a pediatric optometrist and orthoptist at Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, an institution well known for its work in pediatric and binocular vision care. He's a gold medalist in Bachelor of Optometry, holds a fellowship at Binocular Vision, Orthoptics, and Pediatrics, and has completed his Masters of Optometry. Beyond his academic credentials, he is widely appreciated for his clinically grounded approach and his ability to simplify complex decision making in pediatric practice. Before I hand over the session, a few quick housekeeping points. Please keep your microphones muted during the session. You're welcome to post your questions in the chat box as the session progresses. We'll have a dedicated Q&A segment at the end where selected questions from your Google form responses will be taken up first, and then some questions from the chat box will be taken up. Without any further delay, I now invite Mr. Suman Thakur to begin the session. Over to you, sir. Okay, I'm already late. So, good morning, all. Good morning, sir. So, before beginning my session, I would like to know that pediatric refraction is quite different than the adult one. So, before knowing any refractive errors at all, we must be knowing that psychologically our pediatric patients are more hyperepic while they are born. But during the emmetropization period, the hyperometropy really goes and they become emmetropic. So this table shows how our pediatric eye is different from the adult eye. You can see the axial length, corneal curvature, and the equivalent diopter and the lens power. That is difference between the adult eye and the child eye. So you can see the child eye is slightly hyperopic. When the adult goes, it becomes emmetropic. So I was talking about the difference between the axial length, corneal curvature, and the dioptric power of the adult eye and the child eye. Okay, so see, you can see that the axial length of the adult eye is almost around 23.89, whereas child is more hyperopic. And during the emmetropization, the normal. Hello. Yes, sir, you're audible. Okay, okay. So basically, emmetropization is the relationship between the axial length, ocular refractive power, which maintains the optical system of the eye, and which helps us to see good vision. So now let's begin our session. So that the factors that considered for the spectacle prescription in the pediatric eye are emmetropization, amblyopia, visual alignment, refractive error, and the accommodation. So these are the main factors which are more considered while prescribing the refractive error in the pediatric patient. So these are the guidelines for prescribing eyeglasses for younger children, isometropic and anisometropic, depending upon the age, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, and 4 to 7. These are the AO guidance. You can even find the Google. So this is quite important when you are prescribing glasses in squint patient, exotropia and esotropic patients. So now let me begin with the cases, which are more interesting one. So the first case, a 3-year-old child having the power refractive error is 1.5 diopter OU. He is asymptomatic
and he doesn't have any squint. So what can be the management? Seeing the A's, no squint, no symptomatic. So basically there must not be any correction, but routine follow-up should be there every 6 to 12 months. So the second case says is 1 year. Refractive error is right eye is having minus 2.75 cylinder and left eye is only plus 1 diopter. So what can be the plan of management? Okay, I'll be asking questions in the second half, but now the plan of management is the right eye should be fully prescribed. Before knowing this, why I'm prescribing this full prescription in the right eye, I must be making you aware that in against the rule astigmatism, the vertical meridian is blurred. Okay, when the vertical meridian is blurred, the vertical contour which captures our face recognitions, letter recognitions, and object edges becomes blur. Okay, so that's why in this kind of cases we have to prescribe even the child is not matching with the age criteria depending upon the astigmatism. But in this case, due to anisotropia and due to the against the rule astigmatism or the meridional amblyopia, which can be caused, we have to prescribe full prescription in the right eye, and left eye can be left alone. Okay. If you have any doubt in this, we can clear later. Okay. So now we are beginning with the squint part. Before knowing the squint part, I must be describing you this flow chart. Esotropia. Esotropia is basically classified into two portions, concomitant and inconcomitant. We'll be not discussing about the inconcomitant one. Okay, we'll be discussing about the concomitant one because for inconcomitant one, the prescription is depending upon the age, depending upon the acceptance. But when we are talking about the concomitant part, we must be knowing the accommodation, partially accommodation, and non-accommodative part. So while prescribing for non-accommodative part is that infantile, consensual, and that sensory portion and microtropias. For that, we must not be very much careful regarding prescribing one. That can be prescribed with the help of prisms and all. But when you're talking about the accommodative and partially accommodative, the most major part while playing refractive prescription is in this part. Okay. So for accommodative, it's again of two types, refractive and non-refractive. Refractive means there is a refractive error, but there will not be having any normal abnormal AC by ratio. So prescribing a full prescriptive cycloplegic refraction can give you an ortho and a good vision. But in a non-refractive, there will be having an accommodative issue. There will be high AC by A ratio because it's a non-refractive one. Refractive part utna hoga nahi, but accommodation will play more, due to which there will be near distance disparity. This may we also prescribe a bifocal one. With the full prescription, whatever we are getting the cycloplegic, we must be prescribing bifocal in consideration of near distance disparity. ओके, मैं केस के साथ आगे डिस्क्राइब करूंगा, बट ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा तो इट विल इजी फॉर यू. So let me discuss now the second case, refractive error with the exotropia. It's a case of infantile exotropia. Infantile exotropia is a non-accommodative part of the exotropia. Okay, so be very careful while prescribing the glasses. Age 1 year, squint 60 PD, definitely infantile exotropia hai to. Refractive error even in the under atropine is nothing, nil. +1 can be neglected. What can be prescribed? No prescription required. It requires a surgery. Okay. So it's not a refractive part, not a non-refractive part. It's a non-accommodative part, due to which we have to go with the surgery rather than prescribing a glasses. So case 2, 6 years old, refractive error is +4. Atropine refraction done. So here we are prescribing full atropine refraction. Okay. So what can be the case? Either it will be ortho with the glasses that will be concluded at RAET, or it will be there will be some amount of esotropia left, that is partially accumulative esotropia. Okay.
So for partially accommodative esotropia, either you can prescribe prism or you can go with the divergence exercises. Or if you have any suppression on a break point, you can even start with the anti-suppression exercises. And it depends how much the esotropia is left after prescribing the full atro correction. Okay. Now the third case, esotropia with near distance disparity. So first of all, let me clarify what is near distance disparity. Near distance disparity means distance has uh, less ET, but whereas near has more ET. Okay, it is due to the high AC by A ratio. 6 years old child, refractive error is +4 OU. Esotropia for distance is 40. For near, it's 60. Atropine refraction done. Prescribing full atropine refractive error. So while we prescribe full atropine refractive error, we must be very careful. We must be prescribing the executive bifocal or the near ad, which help us to relax the accommodation for near and help us to relax the esotropia for near and help us to make the condition make our binocular vision well. Okay. So the case 4. So here, see, the case 4 is quite interesting. Okay. A 6 years old child having a esotropia of 35 diopter have been prescribed full atropine glasses, but the vision gets blurred. See, the first condition with the +5, his vision is 6/18, but it's ortho for near end distance. But when we are accepting subjectively, the +2.5 diopter is giving vision 6/9, but the esotropia is remaining 20 PD. Okay. So in this kind of cases, we must be prescribing full atro correction only because he's 6 years old and his accommodation is reserved. So he's accommodating more. That's why we must be prescribing the homide so that he can relax the he can relax the accommodation and we can get good vision along with ortho and maintain our binocular vision. Okay, basically homide relaxes the accommodation. The accommodation he's accommodating even with the full atropine correction. That's why with the +5 he's not really comfortable and he's not having good vision. But when +2.5 is given, he's having good vision because he doesn't have to accommodate more with the +2.5. Okay. So refractive error with exotropias. Esotropia is finished. Now let us go to exotropias. Basically, exotropias are mainly linked between myopia and anisometropy. They are not linked with hyperometropy. They are mostly not linked with hyperometropic. They are linked, but they are not mostly linked with hyperometropic. 10 years old child, vision 6/12, manifest exotropia of 35 PD, refractive error is +4, and the vision is 6/6. Okay. So I have given a hyperopic one only because myopic and in myopic and high anisometric, you must be prescribing the full refractive error only. But when you are dealing with the exotropia with hyperopia, we must be very careful. Okay. +4 के साथ 6/6 vision. What can be done? If you prescribe +4, okay, you can prescribe +4 if the vision is remaining to 6/12 or 6/18, because we must be very careful regarding prescription in exotropias and hypermetropias because amblyopia should be our first mode of treatment. First, we must be dealing with the amblyopia, and secondly, we can deal with the exotropias because amblyopia cannot be treated lately, but exotropia can be treated lately too. Okay. So, but in this case, the vision is 6/6. We must be doing fogging. Okay. We must be doing fogging. We must be prescribing the lesser plus with maintaining the VCVS 6/6. If +3 is making vision 6/9 or 6/12 part, we must not be prescribing +3. We must be going with the +4 only. In fact, we know that plus will make exotropia worsen, or as plus relaxes the accommodation, and exotropia gets more and more. Okay, but we must be careful that the vision remains 6/6 while doing fogging. Okay, first priority is vision. The second priority must be squint. I know people will be having doubt. I can clear it out later. Okay, the case is finished here.
So case 2, 3 years old child, manifest XT of 25. Manifest XT for near is 5. Okay, see this one. XT for distance is 25. XT for near is 5. And be very careful. Be very careful seeing the age. 3 years old child. Near distance disparity. So the refractive error is only slender, -1 and -1.5. Can we make some modification in prescription? We can ask anyone if moderator allows. Yeah, sure. So, can we make some modification in this prescription? Anyone? We have got a reply from Harendra saying the answer is yes. Can I know it? What can be the modification from Harinder? Or If anyone anyone from the audience? go ahead, unmute yourself and answer the question. See the airs, see the squint, see the refractive error. Be very careful. Spherical equivalent. Rahul, spherical equivalent. Okay, good try. So, okay, I will begin myself only. Yes, the modification can be made. And the modification is an over minus glasses. Okay, prism power. Distance is 25. Okay, prism power for near and distance disparity. The prism power will give variation for near too, because prism we cannot define for near and distance in a 3 years old child. So for near, the prism will get more to esotropic than the exo one. Okay, for distance you can get corrected for 25 PD, but for near will go to ESO when you give prism to this kind of cases. Okay, so while prescribing prism, your distance and near should be similar. So prism cannot be prescribed. It is an over minus glasses. Okay. So the over minus glasses means you will be prescribing minus glasses in a sphere form, not in a cylinder form. Okay. Because the sphere will stimulate the accommodation, not the cylinder one. Cylinder is not associated with the accommodation. So only the sphere, that is -2. Or if the near distance disparity can be resolved even in the -1.5, you can even give 1.5. Okay, you will be putting the 1.5 in front of the fully prescribed glasses, and you will be checking the squint, amount of squint. So the amount of squint which get resolved with the -2, -1.5, you can prescribe it. How decide spherical power in this case? So spherical power is decided depending upon the amount of squint. Okay, whatever the amount of squint is remaining with the -2 or the -1.5, you can prescribe it. If with the -1.5, then distance and near it's getting ortho, or it's getting to the that we can get the binocular single vision, you can prescribe it. But say basically these cases are for delaying the squint, or for in the view that you can get binocular single vision and maintain it for longer period of time. Because in manifest XT for 25 diopter, it will go to suppression and the surgery will become more critical. But when you maintain the binocular single vision, which can be maintained with the over minus glasses by stimulating the accommodation and relaxing the squint of 25 diopter for distance, you can have हिंदी में ओके सी 25 डायप्टर का स्क्विंट है दूर के लिए, 5 डायप्टर नियर के लिए है. ठीक है, माइनस लेंस हमारा क्या करता है, एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करता है. सो एकोमोडेशन स्टिमुलेट किस चीज के लिए होगा, दूर के लिए होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि दूर का हमारा एकोमोडेशन रिलैक्स होता है. पास के लिए तो स्टिमुलेटेड होता ही है, इसीलिए तो नियर के लिए 25 नहीं है 5 है एक्सटी, क्योंकि एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करके वो अपना 5 बना रहा है. अगर वो एकोमोडेशन को स्टिमुलेट नहीं करता तो डिस्टेंस के लिए भी उसका 25 ही पीडी रहता, उसका एकोमोडेशन स्टिमुलेशन अपने लिए देखना है. इसमें नहीं, उसमें लेना है. ये आप बंद कर दो, इसमें तो देख लिए हमने.
Everyone, like please ignore it, mute वो your भी mic. दोनों तो पटे वाला देखो बेटा ये है Please ये mute your mic. ओके। सो तो अगर वो एकोमोडेशन स्टिमुलेट नहीं करता तो नियर के लिए भी 25 ही होता, उसका एकोमोडेशन अच्छा खासा है। तो इस केसेस में जहां नियर डिस्टेंस डिस्पैरिटी है, जहां एकोमोडेशन स्टिमुलेशन हो रहा है, तुम डिस्टेंस के लिए माइनस लेंसेस दे सकते हो, जिस कारण वो एकोमोडेशन तो स्टिमुलेट करेगा, दूर के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए माइनस दोगे तो एकोमोडेशन स्टिमुलेट करने लगेगा, और दूर के लिए भी वो अपना स्क्रीन को कंट्रोल कर लेगा, एंड यू कैन मेंटेन द बाइनोकुलर सिंगल विजन, बट बी वेरी केयरफुल while prescribing or minus glasses also. Your vision should be 6/6 or whatever the vision. If the vision before prescribing or minus is 6/9, after prescribing or minus should be also 6/9. Okay, मैं बीच बीच में हिंदी में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। So seeing this picture only, everybody must be guessing the next case is of cataract or the after cataract pseudophakia. So ये थोड़ा 2-3 बुलेट पॉइंट्स है जो एवरीबॉडी कैन रिमेम्बर विथ इट। ओके, until 3 years, 3 साल का बच्चा है, कैटरेक्ट सर्जरी हो चुका है, प्रिस्क्राइब नियर डोमिनेंट ग्लासेस। After 3 years, prescribe. After 8 years, until 3, always prescribe executive bifocal. So shift to bifocal or progressive after 8 years. मतलब अगर 3 साल का है तो उसको नियर डोमिनेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। नियर डोमिनेंट कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आफ्टर 3 साल का, आफ्टर 3 years to 8 years, उसका नियर जोन ही रहता है, अभी भी उसका मैक्सिमम विजुअल डिमांड नियर ही रहता है। तो इसीलिए तुम लोग को उसका नियर का डिमांड अच्छा करने के लिए एग्जीक्यूटिव बाइफोकल देना होगा, क्योंकि डी बाइफोकल में नियर जोन कम रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव बाइफोकल में उसका नियर जोन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसका नियर डिमांड फुलफिल होगा। नियर डिमांड फुलफिल होगा मतलब उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। सेकेंडली, वी विल नॉट बी लीडिंग दैट पेशेंट टू द एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया की तरफ हम लोग नहीं ढकलेंगे उसको, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर प्रिस्क्राइबिंग द नियर डोमिनेंट ग्लासेस। सो अगर 1 साल का है तो 3 डायोप्टर ऐड करोगे, 2 साल का है तो 2 डायोप्टर ऐड करोगे, 3 साल का है तो 1 डायोप्टर ऐड करोगे। ओके, एडिशन मतलब क्या होगा अभी नेक्स्ट केस में पता चलेगा, ये समझ लो। 1 साल का बच्चा स्यूडोफेक इक्वेशन आता है तो तुमको 3 डायोप्टर उसका स्पेस में ऐड करना है। 2 डायोप्टर का आता है, 2 इयर्स का आता है तो 2 डायोप्टर उसका स्पेयर में ऐड करना है। 3 साल का आता है तो उसका स्पेयर में 1 डायोप्टर ऐड करना है। ओके, एंड फॉर स्पेशल चाइल्ड, ओके, मान लो कोई डाउन है या सीवियर चाइल्ड है और वो स्यूडोफेकी की है, लेकिन 4 साल 5 साल का हो चुका है, तो उस केसेस में उसका नियर जोन देखकर, उसका मैक्सिमम एक्टिविटीज देखकर, उसका वैसे भी उस केसेस में हम लोग को नियर जोन को ज्यादा इनहेंस करना होगा, तो उस केसेस में भी तुम लोग अपना ये 1 डायोप्टर ऐड कर सकते हो। इफ उसका कोई थेरापी चल रहा है तो, स्पेशल एजुकेशन या फिर ऑक्यूपेशनल थेरापी वगैरह चल रहा है तो, या फिर विजन रिहेबिलिटेशन चल रहा है तो, ठीक है। सो द फर्स्ट केस, 2 years old pseudophakic patient, refractive error is +5, +1 का सिल 90 OU. What should be the prescription? Okay, 2 साल का बच्चा है, अभी मैंने बताया था, in a 2 years old child we must be seeing a near dominant glasses rather than prescribing an executive bifocal or the bifocal one, because they can't differentiate that their distance and their targets or their even zones are only limited, that is intermediate one. So for that we must be prescribing near dominant glasses, or near dominant glass add a spare in the spherical power of the refractive error. Okay, so the final prescription will be +7, +1, 90 OU, and you can prescribe the glasses. -1 नहीं है, +1 का स्पेयर है। ओके, सो ये समझ में आ गया ना। अगर यही केस में अगर 3 साल का बच्चा होगा तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, +6 के साथ +1 90। ओके, अगर ये 5 साल का हो जाता तो +5 देते डिस्टेंस के लिए और नियर के लिए एग्जीक्यूटिव बाइफोकल देते,
plus 3 and you can prescribe it. I hope I am clear with the pseudophakic question. So, case of excessive accommodation. So this is really interesting cases. And lots of people will get confused while prescribing glasses in this kind of patients. Okay. So what are the basically causes of excessive accommodation? Okay, the causes of excessive accommodation can be uncorrected hypermetropia, over minus prescription, which I really usually get in my clinic. I get that over minus prescription in my clinic for this kind of cases. Okay, convergence excess, poor accommodative facility, or the inadequate fusional versions reserves. Okay, और द विजुअल डिमांड और द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब नियर वर्क उसका बहुत एक्सेसिव हो रहा है, उसका नियर वर्क इतना ज्यादा है कि अपना एकोमोडेशन को इतना स्टिमुलेट कर लिया है कि उसका ये केस आ गया है एक्सेसिव एकोमोडेशन. ओके, so let me go with the cases. The case says 9 years old child, the PGP, okay, the previous glass prescription he has having, जो इसका चश्मे का नंबर था -5 के साथ -1.5 180 OU. With that also his vision is 6/6. Okay, with my dry retinoscopy which I am getting is -2 के साथ the cylinder vision is 6/6. But in cover test for distance is ortho, for near is an intermittent ET of 8 PD and divergence amplitude is also 4 to break point. Okay, and in MEM और monocular estimated method जो हम लोग करते हैं लीड और लैग देखने के लिए, ठीक है, इसमें मेरे को -1.5 डाल्का का लीड आ रहा है. सो मेरा वेट रेटिनोस्कोपी, मेरा साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग ओनली 0.5 डायप्टर का स्पेयर. ओके, कहाँ -5 उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, कहाँ मेरे को -0.5 आ रहा है. सी basically these are the cases where there is excessive accommodation. Okay, due to excessive accommodation it is leading to pseudomyopia. Okay, as pseudomyopia or accommodation spasm sustain the contraction of ciliary muscles for longer period of time. मतलब जो हमारा ciliary muscles का contraction होगा वो longer period of time होता है. ठीक है, इसी के लिए आई हमारा ज्यादा accommodate करता है और हमको ज्यादा myopic refractive error आता है. ओके, एंड हियर इसमें क्या है, हमारा जो वर्जिन्स का डिमांड है वो भी बहुत कम है. तो वर्जिन्स कमजोर होने के कारण हमारा एकोमोडेशन इतना हो गया है कि वो ईटी में भी जा रहा है. ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग. सो इसमें हम लोग फुल सीटीसी प्रिस्क्राइब करेंगे रेदर देन प्रिस्क्राइबिंग द फॉल्स मायोपिया और द स्यूडोमायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर. और इसका एकोमोडेशन इतना ज्यादा है इसीलिए इसको एकोमोडेटिव रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देना पड़ेगा. That is plus tense rack. When I'm shifting to Hindi, it's become quite tough for me. Okay, so along with that, we must be planning the divergence exercises. That is with the prism bar, or you can plan with the block string. Okay, if you get any suppression in the break point में suppression मिल रहा है और ऐसे ही तुम जब सेंसरी कर रहे हो तुमको suppression मिल रहा है, तो इस केसेस में तुम लोग को अवॉइड करने पड़ेगा प्रिज्म बार. बिकॉज प्रिज्म बार में अगर सप्रेशन आ रहा है तो उसको कभी हमेशा सिंगल ही दिखेगा, कभी डबल दिखेगा नहीं, तो उसका डाइवर्जेंस कभी स्टिमुलेट होगा ही नहीं. ओके, in these cases you must be planning anti suppression exercises. Either you can plan with the gyroscope or with the synod for MIT or net filters if the child are small. Okay, so I can guess lots of people will be having doubt in these cases. Excessive accommodation है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है -5, क्यों हुआ ईटी, क्यों हुआ ऑर्थो फॉर डिस्टेंस, ईटी फॉर नियर, डाइवर्जेंस एम्पलीट्यूड पोर है. ठीक है, तो ये सब डाउट इसलिए है क्योंकि वो एकोमोडेट ज्यादा कर रहा है. एकोमोडेट ज्यादा कर रहा है मतलब मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है. क्योंकि मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है और तुम लोग एकोमोडेशन को रिलैक्स करोगे
तो एकोमोडेशन रिलैक्स होने के बाद जो उसका कांस्टेंट सिलेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पॉज हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, जिस कारण से जो तुम्हारा एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव एरर है वो आएगा। In this kind of cases, what you can do is you can get the aisle master done. मतलब उसका एक्सियल लेंथ चेक कर सकते हो। अगर उसका एक्सियल लेंथ मायोपिक नहीं है तो फर्स्ट में तुम्हारा स्ट्राइक हो जाएगा कि दिस आर द केसेस, इट्स अ केस ऑफ स्यूडोमायोपिया और एकोमोडेशन स्पैज्म। ओके, so prescribing full CTC, accommodation relaxation exercise. Hello. Good morning, sir. I have a question. Hello, sir. May I ask my question? You'll be allowed to ask question after the session ends because we don't have that much time. It's 11:37 already. That is why I'm urging people, just drop your questions in the chat box. Let the presentation be over and then ask your questions. Ask my question many times in chat box. What is applying? Okay, so let me move. Okay, let me move forward. So, see, while prescribing refractive error or glasses in the amblyopia, okay, you don't have to think much. Really, you don't have to think much. You must be prescribing full correction. Okay, और कुछ सोचना ही नहीं, फुल करेक्शन प्रिस्क्राइब करना है एंड मूव ऑन। हम लोग बहुत चीज देखते हैं ना कि हाँ अंडर करेक्शन कर देते हैं, -10 है एक में, -6 है एक में, चाइल्ड 6 साल का है, उसको डिप्लोपिया हो जाएगा बोल के हम लोग -10 प्रिस्क्राइब नहीं करते। सी, उसको डिप्लोपिया कब होगा? उसका वो आंख पहले ही सप्रेस्ड है, -10 पहन रहा है, नहीं पहन रहा है वो, उसका आंख पहले से सप्रेस्ड है, ठीक है, दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिप्लोपिया। ओके, तो फुल करेक्शन देना है। Okay, now we can get on with the questions. Sajia, we can get on with the questions. Okay, all right. I think we should take the questions from chat box first because we have a lot of queries, and Okay. then we'll take the questions that we've collected in response. The first question was asked by Rahul Sharma. Rahul, can you please specify what case were you talking about? The question was, sir, how do you decide spherical power in this case? Rahul, if you're listening me. Okay, I got. See, Rahul was asking me question regarding the over minus prescription और उस केस में जिसमें हम लोग किसी ने पूछा था कि स्पेरिकल इक्विवेलेंट दे सकते हैं। स्पेरिकल इक्विवेलेंट देने का मतलब तुम क्या कर रहे हो कि उसका सिलेंड्रिकल पावर को हटा रहे हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल पावर को हटा रहे हो इन अ केस ऑफ 3 years old child can cause more refractive error in future. ओके, उसका सिलेंड्रिकल पावर नहीं हटा रहा, अगर मेरिडियनल है तो उसमें क्या होगा, एम्ब्लायोजेनिक फैक्टर आ सकता है, तो उस केसेस में स्पेरिकल कंपोनेंट, स्पेरिकल इक्विवेलेंट ना देकर तुमको ओवर माइनस देना है विद द सिलेंडर ही हैज इन इट। ओके, Okay. And another question is asked by Manu Sharma. What if the patient has multifocal or EDOF intraocular lens? What will be prescribed then? I'm not getting the point. Okay, Manu, can you please unmute yourself and ask the question? Yeah, ma'am. I have a question. Like, if a patient is 2 year old, and he has taken multifocal EDOF lens after pediatric surgery. Okay. Then what should we prescribe him? He's not clear actually. Your voice is not clear, Manu. If you can move to a better area with network. I think there's a network. 2 years old में multifocal, it's quite rare. Okay, we don't prescribe a multifocal lenses or a multifocal IOL in a 2 years old child. Wait, sir. We don't, while doing surgery, we prescribe a single lens. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था, हमारा कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको कैटरेक्ट है, उसको कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मल्टीफोकल या एडॉफ लेंस बच्चे को लगाए, डेफिनेटली वही लगेगा।
Basically, I have seen lots of cases, all the cases doing with a single lens rather than going with the multifocal lenses. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Multifocal lens, I don't know. I haven't really seen anyone going with a multifocal lens in my whole 6 years old career in a 2 years old child. Okay, sir. Basically, we Okay, go sir. with the single lens and उसके बाद we prescribe the executive bifocal or the near dominant glasses. एनाटोमी भी तो डिपेंड करता है ना, Sure, sir. बच्चा का एनाटोमी कैसा है, तुम किस Sure, sir. तरीके से लेंस को प्लेस करोगे. So anatomy in child is quite different than the Sure. adult one while doing the surgeries and all. Okay, sir. Thank you. Okay, so the doubt is resolved. We have another question by Lian Sweeney Cardozo. What if it's amblyopia with squint? I think it is related to the last slide that we were discussing. Okay, see, amblyopia with squint मैंने hyperometropia with exotropia का बताया था, ठीक है. hyperometropia with exotropia है, तो उसमें क्या करना है, हम लोग कम कर रहे हैं ना, हाइपरोपिया को कम करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर विजन ब्लर हो रहा है, मेरा मान लो +4 का ये केस था ना, लेट मी गो विद द केस. हाँ, ये केस था. सी, 10 साल का बच्चा था, चार रिफ्रैक्टिव एरर है, विजन इज गेटिंग 6 एक्सोट्रोपिया 35 है, ठीक है. इस केसेस में क्या कर सकते हो, तुम अपना प्लस को रिलैक्स करने के लिए फॉगिंग कर सकते हो, बट द विजन शुड नॉट गेट ब्लर. फर्स्ट हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी एम्ब्लायोपिया ओनली. सेकंड स्क्विंट, क्योंकि एम्ब्लायोपिया को तुमको बाद में ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन स्क्विंट तुम बाद में सर्जरी से ठीक कर सकते हो. ओके. Okay, sir. Okay, okay. And- Rahul shared. Yeah. ये ठीक है, आगे. One more question. Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग. If there is 5 diopter in right eye and +2 diopter in left eye, atropine can be prescribed in both eye or only in right eye or left eye? केस क्या है, इजोट्रोपिया है या फिर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर है विदाउट एनी स्क्विंट? Esotropia. इजोट्रोपिया है. नहीं, जो इससे पहले वाला आपका सेकेंड स्लाइड है सर, उसके लिए सेकेंड दो सेकंड स्लाइड Atropine मतलब का। कौन सा स्लाइड, किस केस का सेकंड? सेकेंड केसेस सेम इजोट्रोपिया का सेकेंड केसेस. ओके, तुम जाओ. ये इसमें, ये तो केस सेकंड जी इसमें. ओके, यू मस्ट बी sir. प्रिस्क्राइबिंग फुल. ओके, +5 राइट में, +2 लेफ्ट में. there is written we can prescribe atropine. Atropine can be prescribed in both eye or single eye. both eyes you must be prescribing atropine for the both eyes, because जो +2 से थोड़ा मोड़ा भी जो उसका एकोमोडेशन रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको हेल्प करेगा अपना बाइनोकुलर सिंगल विजन मेंटेन करने के लिए. ओके. Sure sir, thank you sir. एक में तो +5 है ना, मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द ग्लासेस ओनली. So why not prescribing the +2 only, which will relax the accommodation furthermore, and esotropia will get resolved. I think that explains it. We have another question by Rahul Sharma. If patient is aphakic, how do we decide the near addition power? See, if the patient is aphakic, we prescribe along with that only. Plus एक के साथ 3, 2 के साथ 2 and 3 के साथ 1. Okay. Okay. And another Aphakic question है, is uniocular है. Uniocular Mhm. aphakic में I have seen lots of cases where we prescribe the contact lenses. Okay. Uniocular aphakic में. Okay. Age wise, is that what you're saying? Yeah, age wise. Okay. We have another question by Rahul. Sir, in which case we perform the CTC method? See, CTC method basically now we have accepted in all myopic cases. Okay. Before till 8 only we were doing CTC for myopic one, but for now myopic till 18 or 16, whatever you say as an adult one, we do cyclopentolate refraction.
to resolve all the latent refractive error. Okay. And for hyperometropia also, we are doing CTC till the age of 16. And basically for hyperometropia, you can do with the till the age of 8. Okay. But for your if you're not good with the dry retinoscopy, you can go with this CTC in this kind of cases also. Okay, we have another question by Manu. In case of extra accommodation, why there is extra minus number? There should be over plus number in that case. Okay. So see, when you are accommodating, you must be knowing the ray diagram. Okay. रे डायग्राम में क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है. I can't make the ray diagram here. Okay. So when you are, I can give you whoever he is, I can give you the explanation with the ray diagram. It will get more clearer. Rahul, you can tell me wherever you get the time. I can give the ray diagram, which will clarify you more nicely. Okay. ये लूंगा ना तो वो उतना समझ में नहीं आएगा जितना रे डायग्राम समझ में आएगा. Yes, sir. Anubhav, do you want to ask something? You've raised your hand. I think there are no more questions from live audience, but we have collected some questions from the Google form response. So if you would like, can I please ask them? Yes, sure, definitely. Okay. So we have a very first question by Amit Verma Kumar, and the question is, what is the gold standard protocol for accurate cycloplegic refraction in young children? And how should we alter our prescription based on visual development milestones? सी विजुअल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के साथ जो अल्ट्रेशन कर रहा है, अगर तुम्हारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं है, अच्छा नहीं है, द पेशेंट इज डाउन और सीवियर और न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यू है, तो गो विद द होमाइड. ओके, क्योंकि होमाइड विल नॉट इफेक्ट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व पाथवे, जिस कारण से तुमको कोई भी साइकोसिस या फिर वॉमिटिंग या उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होगा. ठीक है, तो गो विद द होमाइड विच इज द सेफेस्ट ड्रग. और उस होमाइड के साथ तुम्हारा जितना भी हाइपरमेट्रोपिक आ रहा है और प्लस आ रहा है, उसको वो फुल प्रिस्क्राइब करना है. क्यों? क्योंकि उसमें एकोमोडेशन जो डिमांड होता है वो डिफिशिएंट होता है. मतलब इस केसेस में, इस काइंड ऑफ केसेस में तुम्हारा एकोमोडेशन उतना नहीं करते, बच्चा अपना एकोमोडेशन को उतना यूज नहीं कर पाते, इसीलिए तुम अपना प्लस दो, क्योंकि उसका रिलैक्स हो पाए, उसका नियर विजन और क्लियर हो पाए. ओके. सेकेंडली तुम्हारा इजोट्रोपिक केसेस है, उस केस में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? You go with the atropine, because atropine relax the full accommodation and will give you the full refractive power. Okay. Yes, sir. And अगर exotropia भी है, तो exotropia below 2 years go with the atropine. After 2 years you can go with the cyclopentolate if the patient is not neurological. Okay. We have another question by Lucy Johnson. Simple retinoscopy tips to determine power in children below 10 and uncooperative patients. See, the simple retinoscopy tips is you must be very much accurate with the retinoscopy one. इसमें कुछ सिंपल है नहीं. If you're not accurate with the retinoscopy, तुम लोग को कुछ सिंपल लगेगा ही नहीं. It's a skill issue. Just Sorry? keep practicing. I think it's a skill issue. Keep practicing. Yeah, There's it's nothing. a skill issue only. If you're not accurate, if you're not handy with the retinoscopy one, even in the adult, you can't do refraction. बच्चा तो दूर का बात है. Exactly. There's no, I don't think there's any cheat code to retinoscopy. वही है, 5-6 साल retinoscopy करो अच्छे से. Exactly. The more you do, the smoother it gets. There's no other way to it. We have another question. Even at this age, at my age, I even go for some cross check with my seniors in pediatric patients. So it's quite difficult to do refraction in a retinoscopy in a children if you have not practiced well. Okay. There's no theory or bookish language or any tips to it. You just have to do it. Keep practicing and maybe it will get better with time. Yeah. Yeah, we have another question by Lucy. How to give cylindrical power in varying response cases in high cylindrical cases? So see,
ये अगर वेरिंग रिस्पॉन्सेस सिग्निफिकेंट केसेस में आ रहा है, मतलब तुम्हारे रेटिनोस्कोपी में इश्यू है, क्योंकि सिलेंडर विल नॉट कॉज वेराइंग इफ एकोमोडेशन हैपेंस। मतलब एकोमोडेशन हो रहा है तो सिलेंडर चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर इज नॉट एसोसिएटेड विद द एकोमोडेशन ओनली। अगर Okay. स्पेरिकल में चेंज आता है तो ऑफकोर्स हम लोग सोच सकते थे कि हाँ क्या दे क्या ना दो, बट अगर सिलेंड्रिकल में चेंजेस आ रहा है मतलब तुम्हारा रेटिनोस्कोपी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिलेंड्रिकल कभी भी एकोमोडेशन से एसोसिएटेड नहीं होगा। तो तुम्हारा साइक्लोप्लेजिक में जितना सिलेंडर आ रहा है गो विथ इट। Okay. Okay. We ठीक है, have the third. साइक्लोप्लेजिक में जो भी सिलेंडर आएगा वो तुम्हारा एक्यूरेट ही रहेगा इफ तुम्हारा रेटिनोस्कोपी सही है तो। Okay, sir. Okay. We have our third question by Yukta. Should we give full correction in pediatric patients or not? इट डिपेंड्स अपॉन द केसेस। इफ द एज क्राइटेरिया इज नॉट मैचिंग, सी एक साल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, +4 आ रहा है, तो तुमको उसको क्यों लेना है? उसका +6 तक है अभी, +6 तक उसका बेसिकली क्या होता है, ये क्राइटेरिया क्या है, +6 तक उसका मतलब इमेट्रोपाइजेशन के अंडर फॉल होगा और वो एम्ब्लायोपिक नहीं होगा, इसीलिए हम लोग वो करते हैं। ठीक है, Okay, so it is फुल case specific. प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड्स अपॉन द एज, डिपेंड अपॉन द केस। We cannot just generalize it. या वी कैन नॉट जस्ट जनरलाइज इट। Okay, so our fourth question is by Sienna. How to determine the visual acuity of a very uncooperative patient who does not fixates and follows the light, neither does any reading? See, in this kind of cases, no, the only thing which I was telling before only, अगर वो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, तुम लोग को हम लोग को किसी को विजन नहीं बता रहा है, लेकिन यू कैन डू द रेटिनोस्कोपी ना, तुम लोग को रेटिनोस्कोपी में इतना पता चल जाएगा कि उसका रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है। अगर उसका सेंसरीज इशू है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, जिस कारण से वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या फिर वो हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो यू मस्ट बी गोइंग विद द विजन रिहैबिलिटेशंस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. We have another. uncooperative is nothing, actually uncooperative is nothing. As a pediatric practitioner, I cannot say any child is uncooperative. हम लोग को जैसे भी उसका विजन निकालना ही होगा, एनी हाउ। तुमको डांस करके दिखाओ, उसको इतना इंगेज कर लो अपने आप के अंदर कि वो तुमको इतना कोप अप कर ले और तुमको विजन क्या सब कुछ बता दे। Obviously, it's a kid. You cannot expect it to be cooperative. They are in their natural state. I still keep my mobile on, लकड़ी की काटी play on and do my refraction and see that vision and all. तो it depends तुम कितना कोप अप कर सकते हो चाइल्ड के साथ। The key, I think, is to keep the child engaged. More the child is engaged, easier for you to do stuff. We have another question by Ankit Jadoo. Does patching or penalization become less effective, and what are the optimal strategies for older children with persistent amblyopia? Okay, it's my journal basically. I see amblyopia in my clinic. मैं amblyopia ही देखते आया हूँ अभी तक, ठीक है, and I am specialization on in that only. So when we are talking about the amblyopia, see, amblyopia में हम लोग पैचिंग भी करें ना, पैचिंग इज अ ओल्ड मेथड। ओके, पैचिंग में क्या होता है, एक पैसिव थेरापी होता है। पैसिव थेरापी मतलब तुम्हारा जितना रिजर्व स्टिमुलेशन है, उतना ही स्टिमुलेशन से तुम दूसरे आंख से देखोगे। एक आंख को पैच किया, दूसरी आंख से जितना तुम्हारे न्यूरॉन्स पास कर रहा है सेंसेशन उस चीज को देखने के लिए, उतना ही पास कर रहा है। एक्स्ट्रा पास कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को भी नहीं पता, ठीक है, तो पैसिव थेरापी हो गया। सो फॉर एडल्ट वन यू मस्ट बी गोइंग विद द न्यू कंप्यूटर बेस्ड थेरापीज, एनी कंप्यूटर बेस्ड थेरापी। आई विल नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स, बट कोई भी कंप्यूटर बेस्ड थेरापी में जाओ, ठीक है, जिससे उसका एकोमोडेशन बोलो, उसको न्यूरॉन सेल्स को स्टिमुलेशंस मिले और उसका और स्टिमुलेशन मिलने के कारण से विजन इनहेंस हो, rather than just believing in patching or penalization. Okay, sir. Okay. We have a last second question by Varsha Gupta. A patient having squint ADS, how to manage this case and how to prescribe prism in this case? Squint क्या? Patient having squint? ADS. ADS means? Okay. I myself don't know. Oh, ADS I पता नहीं मेरे को भी ADS, squint ADS एक है alternative divergent squint है क्या? Is it alternative divergent squint? Maybe. Are you I guess here? Are you with us? I guess that's it. I think it must be that only. ADS so much small ADS.
So when you are talking about the exotropia, and what's the case? The case is a patient having squint ADS, how to manage this case and how to prescribe prism in this case. It is not specified what kind. See, see, in this criteria, now you must be seeing the age. Okay, you must be seeing the amount of squint. If the amount of squint is being resolved with the prism, you go with the prism. If it is not being resolved, or if you are not maintaining the binocular single vision with the prism, then you can't prescribe prism at all. You must be going to the surgery only. क्योंकि अगर इस केसेस में तुम प्रिज्म के साथ या फिर मान लो एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करे, और लेकिन एक्सरसाइज और प्रिज्म के साथ अगर बायोमोलिकुलर सिंगल विजन मेंटेन नहीं है, उसका सप्रेशन स्कोटमा और बढ़ता जाएगा, और इन फ्यूचर सर्जरी करने में और दिक्कत आएगा, और स्क्विंट और बढ़ता रहेगा. ठीक है. Okay. तो तुम्हारा क्वेश्चन में एज स्पेसिफाई होना चाहिए, अमाउंट ऑफ स्क्विंट स्पेसिफाई होना चाहिए, और द रिफ्रैक्टिव एरर तीनों स्पेसिफाई होना चाहिए. Okay, sir. Okay, sir. I think these were the questions. We have one last question that we have received by our attendees. Gautam Mathur has sent this question. Sir, if you can see in the chat box, we have pasted it because it is a case. Okay. I cannot narrate. Chat box. Yes, sir. If you want, you can stop presenting now. Okay. Adnan has posted this question right now. This will be the last text in the text box. Okay, this one, no? Yeah. So, see, अभी मैंने बोला था ना, वो जो मैंने केस ऑफ एक्सेसिव एकोमोडेशन लिया था, उस केस में अगर किसी को भी कुछ डाउट हो रहा है, गो विद द एक्सियल लेंथ. सी, ये किस में क्या है, एक्सियल लेंथ कंपेयरिंग टू एज हाइपेरोपिक है. ओके, 21.75, 21.94 एक्चुअल में नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑलमोस्ट 23, 22, 22.75 ये सब आना चाहिए इस केसेस में. लेकिन ठीक है, हाइपेरोपिक चाइल्ड हो सकता है, साइक्लोप्लेजिक में कम रिफ्रैक्टिव एरर आ सकता है. ओके, ड्राई में -7.5, -7 आ रहा है, लेकिन साइक्लोप्लेजिक में क्या आ गया, 0.5. सो विच इज ऑलमोस्ट कोरिलेटिंग विद द एक्सियल, नॉट ऑलमोस्ट, लेकिन वो शायद ये हाइपोथेटिकल केस होगा, इसीलिए इतना कोरिलेशन नहीं आ रहा है. ठीक है, दो मान लो इतना एक्सियल लेंथ है, जिस कारण से इसका 0.5 डायप्टर स्फेरिकल आ रहा है. सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस -1 है, विच शुड नॉट बी गिवन. ओके, इसका एक्सेप्टेंस -1 आए, -3 आए, जितना भी आए, इसको हम लोग को साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन ही देना है, क्योंकि जो भी एक्सेप्टेंस कर रहा है वो अपना एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करके कर रहा है, तो उतना नहीं देना है, रिलैक्स करके उसको देना है. वो मतलब साइक्लोप्लेजिक में जो आया वो देना है. कवर टेस्ट में इंटरमीडिएट ईटी आ रहा है, मतलब उसका एकोमोडेशन इतना है कि उसका वर्जेंस ड्रिवन इजोट्रोपिया हो चुका है. ठीक है, मतलब उसका वर्जेंस 4 है, जिस कारण से कन्वर्जेंस इतना ज्यादा हो गया, डाइवर्जेंस 4 होने के कारण से कन्वर्जेंस इतना ज्यादा हो गया कि वो इज गोइंग टू इजोट्रोपिया. सो ये क्या केस है, दिस इज अ केस ऑफ वर्जेंस ड्रिवन accommodative isotropia, वर्जेंस ड्रिवन isotropia along with accommodative spasm और pseudomyopia. ओके, सो इस केस में ये केस का क्राइटेरिया है. सो दिस केस इज वर्जेंस ड्रिवन isotropia along with accommodation spasm. ठीक है, ये केस ये है. अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ने में डेफिनेटली लीड ऑफ एकोमोडेशन आ रहा है, एनआरए फेल्ड, डेफिनेटली एनएफबी भी कम आएगा इसका. ठीक है, स्टार्ट एवीटी एंड होमेट्रोपिन टीडीएस. ठीक है, होमेट्रोपिन स्टार्ट किया है ये केस में. ये केस में तुम होमेट्रोपिन ना स्टार्ट करके मैंने जो हम लोग ने जो प्लान किया था लास्ट केसेस में ना, वेयर हम लोग ने एकोमोडेशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस दिया था. 15 साल का बच्चा है, हम लोग दे सकते हैं एकोमोडेशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेस दे सकते हैं. ठीक है, पेशेंट एक्सेप्टेड मोर -+ करेगा. पेशेंट 15 साल का है, उसको -7 जो उसको -7
पहन रहा होगा कहीं से भी कुछ भी, या -5 कुछ भी पहन रहा होगा, उतने साल से वो पहन के रखा है, तो उसका अपना एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करने का आदत हो चुका होगा, तो वो रिलैक्स नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपना ज्यादा मायोपिक एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वी मस्ट नॉट बी गोइंग विद अ फुल मायोपिक जो ड्राई में आ रहा है या सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस कर रहा है। सीटीसी करो, सीटीसी प्रिस्क्राइब करो, सीटीसी प्रिस्क्राइब करने के बाद एकोमोडेशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस दो। और तुम्हारे केसेस में ईटी है, इंटरमीडिएट ईटी है, मान लो उसका ब्रेक पॉइंट आ रहा है, मतलब सप्रेशन पॉइंट आ रहा है, तो गो विद द एंटी सप्रेशन एक्सरसाइजेस टू। इफ मेरा कोई फेलो होगा यहाँ पे ना, एक कोई भी फेलो अगर होगा, तो लास्ट सैटरडे वी हैव सीन अ केस ऑफ दिस वन, जिसमें दूर के लिए एक्सटी था, नियर के लिए ईटी हो गया। सेम -5 उसका पहन रही थी, मेरे को ड्राई में -2 आया था, साइक्लो में ओनली 0.5 का स्पेयर आया था, और उसको मैंने 0.5 दिया था। लेकिन जब मैंने बाइनोकुलर सिंगल विजन देखा, उसका ब्रेक पॉइंट भी था प्रिज्म बार में, तो वी हैव प्लान एंटी सप्रेशन एक्सरसाइजेस along with divergence 1 and has been prescribed -0.5 only, not the -1 which is the subjective acceptance. What could be the diagnosis? Diagnosis मैंने पहले ही बता दिया था. Diagnosis is a vergence driven esotropia along with accommodation spasm or the pseudomyopia. इस केसेस में फ्लक्चुएटिंग विजन होगा, विजन तुम्हारा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ठीक है। Okay, sir. I think that sums up. Before we end the Q&A, I just want to take two last questions. So, if you want, may I? Definitely go. Oh, 12 बज गए. Just two last questions. Sure. Two last. Okay. Okay, so we have a question from Bushra Yusuf ma'am. 2-year of patient having alternate exotropia. After atrophy and refraction, there is no power. What will be the treatment for this patient? Alternate esotropia or Exo. exotropia. Yes. So if there is no refractive power, then और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, सर्जरी के लिए जाएंगे if the exotropia is more. Okay. So surgical treatment I is the don't way. think so. इसमें मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि क्या, लेकिन अगर स्क्विंट है और रिफ्रैक्टिव पावर नहीं है तो तुम रिफ्रैक्शन दोगे ही नहीं ना, सर्जरी के लिए जाओ स्क्विंट का. Okay. Then surgical treatment is the Yeah, surgical treatment. If there is no refractive error, or if she is asking about an over minus 3 years old child, तो उसमें over minus देने के लिए नियर डिस्टेंस डिस्पैरिटी होना चाहिए. ओके, अगर नियर डिस्टेंस डिस्पैरिटी नहीं है तो देने का क्या फायदा है. उसका एकोमोडेशन नहीं कर रहा है ना, नहीं तो पास के लिए तो वो अपना स्क्विंट कम कर लेता ना, एक्सटी कम कर लेता ना, इन पास के लिए नहीं कर पा रहा है, तो मतलब दूर के लिए भी एकोमोडेशन को कैसे स्टिमुलेट करके कम कर सकते हैं. We have a last question. If a patient will be born on 7th or 8th month of pregnancy, will there be a chance of squint for that baby or not? See, it all depends upon the embryology. Okay, 7 months में बॉर्न हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्क्विंट आएगा या फिर वो आरओपी होगा ही होगा, या फिर उसको हाई मायोपिक आएगा ही आएगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजी में किस तरीके से तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है. Okay, sir. Thank you It's so not much, sir. mandatory. Okay, so it's not mandatory. It doesn't depend on these things. Yeah. Embryology is the factor. Doesn't depend. It doesn't happen. वो एम्ब्रियोलॉजी में ही होता है. Okay, sir. Thank you so much, This sir. case is quite interesting. The last case, the cycloplegic refraction वाला case. Yes, sir. That is why I took it. It's quite interesting. मेरा प्रेजेंटेशन में भी था. I guess दोनों के साथ ये और क्लेरिफाई हो चुका हुआ. It simplified it more. Thank you so much, sir, for answering all the questions in such an easy to understand manner and for sharing your expertise and experience with us. I would also like to thank Neuroptech for organizing this webinar and all the participants for their active engagement. Arman, if you could please share the QR code. Attendees, I want you all to give you 30 seconds of your time and just take the screenshot of the QR. Okay, so everyone please scan the QR for your certificate, fill up the form, and then you can receive your e-certificates.
Thank you once again, everyone, for joining us, and we hope to see you all in our upcoming sessions. I think you all have taken the screenshot by now. That's all for today. This is your moderator, Shazia Shabir, signing off. Have a great day ahead.